Hello students, welcome to my YouTube channel Integrated Physics Studies IPS. एथिरे मु ऑलरेडी प्लस टू सेकेंड ईयर सिलेबस कंप्लीट कर सारी एबे मु प्लस थ्री CBCS फिजिक्स ऑनर्स जीई आ MSc फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस रो वीडियोस अपलोड करुच्ची जदि भल लगिला ताले वीडियोस को लाइक कर देबा और चैनल को सब्सक्राइब कर देबो यू कैन शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स आल्सो इट्स कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन पई बेल आइकन को एठी ऑल रे सेट कर देबो तापरे वीडियोज रो क्लैरिटी बढ़ावा पई गो टू सेटिंग्स क्वालिटी एडवांस उपरे क्लिक करी यू कैन इंक्रीज द रिजोल्यूशन सबू वीडियोज पाई पीडीएफ नोट्स मु पठेबी जोटा एठी ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्लिक करी यू कैन गेट द लिंक फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स तापरे मोर चैनल नेम को क्लिक कले सबू वीडियोज को मु यूनिट वाइज एच पार सिलेबस सजाई की रखिथिबी व्हिच यू कैन गेट फ्रॉम द प्लेलिस्ट एठी सर्च करि परिबो ओके थैंक यू हेलो स्टूडेंट्स आज रो टॉपिक रे हमें यूलर्स एंगल्स विषय रे पढिबा ऑलरेडी we saw that a rigid body require 6 independent generalized coordinates for specifying its configuration completely. Okay, out of those 6 generalized coordinates 3 are specifying the position or the translatory motion and the other 3 will be specifying the orientation or rotation of the rigid body. So ei jo last tinta generalized coordinates actually these are indicating some angle of rotation which are nothing but the Euler's angles. So let us now proceed to find the 3 independent parameters which would completely specify the orientation of the rigid body. As I said, it is called as Euler's angles. So for this you see here the figure where we have taken let x y z. Okay, x y z एपटे आसीगला एटा y एटा z आउ एपटे अछि तुमरो x. Okay, so let us say that x y z be the orthogonal space set of axes having unit vectors I j k. Okay, एटा तुम वेक्टर एनालिसिस रे भी पढिथिबो along the respective axes. Now x dash y dash z dash एटा ही गला प्राइम्ड बा जो orthogonal body set of axis ro coordinate having unit vectors I dash j dash k dash. Okay, as you can see here this is x dash, this is y dash and this is z dash. Okay, remember याकू तमे 3 डायमेंशन रे कंसीडर करिबा को पड़िबो राइट. अच्छा तापरे as you can see in the figure xy plane is different from x dash y dash plane. Okay, xy plane माने एटा राइट आउ x dash y dash plane माने ए जो शेडेड रीजन टा. ओके, सो एटा दुईटा जाक प्लेन पूरा पूरी डिफरेंट अछि. also similarly yz plane will be different from y dash z dash and in order to account for the rotatory motion we shall carry out the transformation from space to body set of axis. एई भलिया हमें ट्रांसफॉर्मेशन करिबा space set of axis रू जिबा हमें body set of axis को and this transformation will be worked out through तीनटा successive rotation which will be performed in a certain specific order. Okay, that means we rotate the space set of axis x y z so as to coincide with the body set of axis x dash y dash z dash through 3 successive rotatory operation. तीनटा specific angle रे हमें rotate करिबा. Okay, one after the another in a specific sequence. अच्छा, you can see here एठी जो तीनटा एंगल कथा कहली गोटे एंगल हेबो एटा थीटा तापरे आसीबो phi and then psi. Okay, and এই जो লাইনটা এটা আসছে this is the line of nodes. Okay, আচ্ছা তাহলে এবে আকু পড়িবা আমি. Let us now see the first rotation. So first of all the space set of axis is rotated about the space z axis so that yz plane will now take the new position y1 z1. Okay, space z axis को आमे नेकी तारी चारिपटे एबे रोटेट करिबा through some angle and this makes the yz plane taking the new position y1 z1. Okay, so this new plane now contains the body z dash axis right. a rotation angle को आमे कहिबा phi. Okay, and the new axis formed याकू कहिला x1 y1.
having unit vectors I1 J1. Okay, so this transformation is now represented like this: I1 equal to I cos phi plus j sin phi, J1 equal to minus I sin phi plus j cos phi, ଆଉ K1 as it is ରହିବ which is K. Okay, so ଏଇ जो फास्ट दुईटा इक्वेशन तमे ऑलरेडी देखिछ ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन रे केमती हमें पाउतला तार फॉर्मेट टा. ओके, सो देखो याको हमें फिगर रे भी बुझी परिबा. You can see here in the figure where the z axis এটা constant রହୁଛି, about this z axis it is being rotated through an angle phi. ताले x ଆଉ y यार न्यू पोजीशन को पळे आसला. ताले ऊपर जो हमें इक्वेशन पाइला तीनटा ताकू हमें इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स ए भलिया लिखि परिबा. ओके, सो हमरो एई जो मैट्रिक्स 3x3 मैट्रिक्स गोटे पाउछु जोटा कि एई ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करूची, याकू हमें लिखिला एज कैपिटल डी. ओके, अच्छा ये हैला फर्स्ट रोटेशन. एबे जिबा सेकंड रोटेशन आडको which is performed about the new x1 axis, so that एबे z1 axis coincide करिबो with the body z dash axis, and this also brings the plane x to y2 in the plane x dash y dash. Okay, and the axis x2 y2 obtained after the rotation about x1 through an angle is theta, but however it still do not coincide with the body set of axis that is x dash y dash. Okay, so ये जो नुआ दुईटा हमें axis पाइला ताको हमें डिनोट करला y2 z2 having unit vectors j2 and k2 respectively. ताले ये ट्रांसफॉर्मेशन को अगेन से भलिया हमें लिखि परिबा. प्रथमे हला एठी I2 एज इट इज रहिबो बिकॉज x एक्सिस को सॉरी x1 एक्सिस को हमें नै कि या अबाउट हमें रोटेट करूछु थ्रू एंगल थीटा. ओके, एटा थीटा एंगल रे रोटेट हे गला. अच्छा, ताले बॉडी रो केवल z एक्सिस सहित एटा मैच करूची, z डैश इक्वल टू z2 हे गला. सो सेकंड इक्वेशन देखो, j2 इक्वल टू दिस मच व्हिच इज j1 cos थीटा प्लस k1 sin थीटा, k2 इज इक्वल टू माइनस j1 sin थीटा प्लस k1 cos थीटा. so that again आमे याको मैट्रिक्स भलिया लिखि परिबा. आ मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन पाई गला सपोज कैपिटल C which is this much. ओके, जोटा हमें प्रीवियसली भी बाहर करथिला. तापरे फाइनली वी गो ऑन टू रोटेट इट फॉर द थर्ड टाइम. थर्ड रोटेशन को हमें परफॉर्म करिबा नाउ अबाउट the z2 axis which is nothing but the body z dash axis, because body z dash axis हमें ऑलरेडी पाई सरछु जोटा कि कोइंसाइड करूची z2 और z dash. so that एबे नुआ axis हमें पाउछु x3 which is now coinciding with the body set of axis that is x dash. similarly y3 भी y dash सहित coincide करिगला. so this completes the transformation from space to body set of axis. ଆଉ एई जो थर्ड एंगल ऑफ रोटेशन को हमें कहबा psi. okay, so प्रथमे phi then theta then psi. okay, so you can see here in the figure which is indicated like this. এটা হলা আমরা body z dash axis which is z2 and also now equal to z3. okay, so about this body z dash axis we have rotated it through an angle psi. okay, so that we are getting the exact body set of axis. তাহলে एबे I3 becomes equal to I dash, J3 J dash, K3 एगला K dash. और ये ट्रांसफॉर्मेशन को हमें रिप्रेजेंट करिबा बाय अगेन थ्री इक्वेशन लाइक दिस, एंड हेंस वी विल गेट द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स सपोज हेगला कैपिटल B which is of this form. ओके, सो हमें तीनटा ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स अकॉर्डिंगली पाइला. ओके, सो वी हैव अराइव्ड एट द बॉडी सेट ऑफ एक्सिस आफ्टर as we see after three successive and sequential rotation of the space set of axis. प्रथमे जेमती कहली phi then theta then psi. so the complete matrix transformation A याकू एबे हमें बाहर करिबा. ताले देखो I dash J dash K dash, this is nothing but the third जोटा rotation रे पाइला which is I3 J3 K3 और B into I2 J2 K2. तापरे ए I2 J2 K2 को हमें लिखि परिबा C into I1 J1 K1. अगेन याकू लिखि परिबा D into I J K. ताले B C D ही गला into I J K. so I dash J dash K dash थिला body set of axis रो unit vector, I J K ही गला space set of axis रो unit vector. ताले ए जो B C D आसिला याकू सपोज हमें कहला कैपिटल A. then we can write x dash y dash z dash to be equal to A into
x, y, z. Okay, and if we go on for calculating the inverse transformation from ଏବେ ଓଲଟା କରିବା ଯଦି ବଡିରୁ ସ୍ପେସ୍ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ତାହେଲେ ୟାକୁ again similarly ଆମେ represent କରିପାରିବା x y z to be equal to a inverse x dash y dash z dash. Thus the matrix of transformation A furnishing the x dash y dash z dash axis মানে body set of axis from space set of axis x y z directly is nothing but the product of matrices which are taken in the indicated order of rotation, that is phi, theta and psi, which is nothing but b c d. So a ହେଇଗଲା b c d. ଏବେ b c d जोटा तीनटा आमे matrix transformation पाइथिला ताकू एबे आमे separately put कला and we go on for calculating the matrix multiplication. Okay, simple matrix multiplication करले we are getting the value of a like this. Okay, and the inverse transformation matrix from body to space set of axis which is nothing but a inverse or equal to a tilde. Okay, এটা ତା ସହିତ ସମାନ ହେବ and it will be an orthogonal matrix, therefore a inverse ର ବି value ଟା same ରହିବ. Okay, ଆଚ୍ଛା, so এটা ଆସିଲା a inverse. ଦେଖ finally we can also prove that the resultant transformation which is a equal to b c d is an orthogonal transformation. केमती এটা orthogonal है ना, we can prove it also. देखो physically we accept this for from an orthogonal system of axis which is space set of axis x y z we come again to an orthogonal space set of axis ରୁ ଆମେ orthogonal ପୁଣି body set of axis ପାଉଛୁ which is x dash y dash z dash. So we simply have to prove that a tilde is equal to a inverse. Okay, but ଆମେ ଜାଣିଛୁ a is equal to b c d ଆମେ ନେଇଥିଲା. So each one of b c d এটা ତ represent କରୁଛି orthogonal transformation କୁ for the simple reason that the transformation axis is affected by simple rotation. ତେଣୁ ଏଟାକୁ ଆମେ orthogonal transformation separately କହିପାରିବା. Okay, so b c d already satisfy କରୁଛି orthogonality condition କୁ. That means b tilde is equal to b inverse, c tilde equal to c inverse and d tilde is equal to d inverse. ताले एबे जदि आमे a tilde बाहर करिबा, that means a रो वैल्यू एबे पुट करला b c d यार होल tilde बाहर कर देला. सो एटा उल्टे देबो तारो जो क्रमटा अछि, so d tilde c tilde b tilde. And since when the transpose is taken of a matrix product they can be multiplied only in the reverse order. Okay, ସେଇଥିପାଇଁ ଏଟା ଉଲ୍ଟେ ଦେଇଛି. So inserting equation 12 into this equation we are getting a tilde to be equal to d inverse c inverse b inverse. Okay, because a tilde टा यार inverse थिला ई सब जेते, right? So एटा हेगला again एबे inverse को एबे हमें total लगी नहीं जिबा. So b c d रो whole inverse which is nothing but a inverse. So this proves that the matrix A represent the orthogonal transformation because A tilde hegala A inverse, and here again we have used the reversal property of the inverse of the product of two or more matrices, right? So this is all about your Euler's angles. Thank you.